Okay, today we are going to do types of cooperative society. And what are the types of cooperative society? There are 6 headings under which types of cooperative societies are explained, like consumer cooperative, producer cooperative, marketing cooperative, farmers cooperative, credit cooperative, and housing cooperative. In your NCERT book, the explanation for these types of cooperative society is given in paragraph. Little difficult to understand, so what I have done is I have segregated it under 5 headings so that it's easier for you to understand what we are talking about in terms of different types of cooperative society. The first one suggests as name, so nature of work. Means what? The name and that kind of cooperative society. Name that kind of cooperative society. Like for example, consumer cooperative. So who forms it? As name, so is the nature of work. So who forms it? Consumer cooperative society. Consumers form it. Next, producers cooperative society. Who forms it? Small producers form it. Next, marketing cooperative society. Who forms it? Producers who are willing to sell their product. They form it. Next, farmers cooperative society. Who forms it? Now all those farmers who have fragmented land, that means their land is divided into pieces or different various places, they pool their resources or they come together, they buy a piece of land and then they do the farming or get their land together, is farmers cooperative society. Credit cooperative society, as the name suggests, they provide reasonable credit to the members of the society. Housing cooperative society, as the name suggests, they help the consumers, they come together and help their members to buy a house or a piece of land or buy the house in installments. So all these facilities are given. So as name, so is the nature of work. Consumer cooperative societies are formed to protect the interest of consumers, of course, yes. So they are formed for the interest of consumers. Second, producer cooperative societies are set up to protect the interest of small producers, like I told you just now, small producers. Marketing cooperative societies are set up to help small producers to sell their product. Now here selling is a part, so not producing, we're talking about selling. Farmers cooperative society are established to protect the interest of farmers by providing better inputs at lower price, because sometimes inputs is a problem. They do not have enough fertilizers, seeds or other kind of equipment through which they are going to do the farming. Next is credit cooperative societies. These are established to provide easy credit on reasonable terms. Reasonable terms means what? When you get money at lower rate of interest. And housing cooperative societies are established to help the people with limited income to construct houses at reasonable cost. I told you just now, sometimes we talk about installments also out here. Okay. Now, what is the aim of every cooperative society? One big aim is to eliminate middlemen. That's well understood. That was a major aim of any kind of cooperative society. So, starting with consumer cooperative, eliminating the middlemen. But यहाँ पर क्या purpose क्या है? Economy in operation, ताकि चीज़ जो है सस्ती हो जाए. The products are cheaper. The producers cooperative society to fight against big companies या big capitalists. So जो बड़ी बड़ी कंपनी होती है, कैपिटलिस्ट, हाँ ओके, तो बड़ी बड़ी कंपनी होती हैं टू फाइट अगेंस्ट बिग कंपनीज, या बड़े बड़े कंपनी होती है क्या करती हैं, वो छोटे छोटे प्रोड्यूसर्स को कंपटीशन देती हैं. भाई बड़ी कंपनी प्रोडक्शन ज़्यादा लार्ज स्केल पे, तो जब प्रोडक्शन मास स्केल पे होती है तो कॉस्ट कम हो जाती है. तो जो छोटी कंपनीज होती हैं वो थोड़ा थोड़ा रॉ मटेरियल लेते हैं, उनको वो महंगा पड़ता है, वो बेचते महंगा है, तो कंपटीशन बड़ा वाइड हो जाता है. तो क्या होता है, कुछ लोग 10 प्रोड्यूसर्स इकट्ठे आते हैं, पूल करते हैं रिसोर्सेज और बिग कैपिटलिस्ट के साथ क्या करते हैं, कम्पीट करते हैं. यहाँ पर टू एलिमिनेट मिडलमैन एंड इम्प्रूव कॉम्पिटिटिव पोजिशन ऑफ मेंबर्स, ताकि सेलिंग अकॉर्डिंगली हो सके. यहाँ पर टू गेन द बेनिफिट्स ऑफ लार्ज स्केल फार्मिंग, क्योंकि हमने क्या करा, फ्रेगमेंटेड लैंड को टुगेदर कर दिया, एंड टू इंक्रीज द प्रोडक्टिविटी. ऑफकोर्स एक तरह की लैंड में एक तरह का प्रोड्यूस बनेगा तो प्रोडक्टिविटी हमेशा इंक्रीज होगी. टू प्रोटेक्ट द मेंबर्स फ्रॉम एक्सप्लॉयटेशन ऑफ मनी लेंडर्स हु चार्ज ज़्यादा रेट ऑफ इंटरेस्ट. हमारे प्राइवेट मनी लेंडर्स होते हैं, ज़्यादा रेट ऑफ इंटरेस्ट चार्ज करते हैं, उसको अवॉइड करने के लिए हमने कौन सा क्या एम है क्रेडिट कोऑपरेटिव सोसाइटी का, कि वो उन मनी लेंडर्स से आप बच जाए.
हाउसिंग कोऑपरेटिव सोसाइटी टू सॉल्व हाउसिंग प्रॉब्लम्स ऑफ मेंबर्स बाय कंस्ट्रक्टिंग हाउसेज, घर कंस्ट्रक्ट करके दे के लोगों को, या वो लैंड जो वो खुद नहीं खरीद सकते। आपने वो HIG, MIG, LIG, लो इनकम ग्रुप, हाई इनकम ग्रुप, मिडिल इनकम ग्रुप, उस टाइप वाले फ्लैट्स की सोसाइटी सुनी होगी, और बहुत ज़्यादा एक्सटेंसिव डुप्ले टाइप ऑफ सोसाइटी सुनी होगी, उससे भी। सो देर आर डिफरेंट टाइप्स ऑफ सोसाइटीज, दे कंस्ट्रक्ट हाउसेज फॉर द बेनिफिट ऑफ द पीपल और द मेंबर्स, एंड दैट्स हाउ थिंग्स गो। नाउ मेंबर्स कौन है इसमें? क्या है? इट कंप्राइज ऑफ कंज्यूमर्स, लाइक आई टोल्ड यू, डिजायरर्स ऑफ ऑब्टेनिंग गुड क्वालिटी प्रोडक्ट एट रीजनेबल प्राइस, क्योंकि मिडलमैन एलिमिनेट हो जाता है, अच्छे क्वालिटी के प्रोडक्ट बिना मिडलमैन के सस्ते मिलेंगे, तो इनका एक्चुअली मेंबर्स का काम ये होता है। प्रोड्यूसर कोऑपरेटिव सोसाइटी के मेंबर्स क्या करते हैं? दे कंप्राइज ऑफ प्रोड्यूसर डिजायरर्स ऑफ प्रोक्योरिंग इनपुट्स, रॉ मटेरियल चाहिए फॉर प्रोडक्शन टू मीट द डिमांड ऑफ पीपल, ताकि बड़े बड़े कैपिटल्स के साथ हम क्या कर सके? compete कर सके बार बार। प्रोड्यूसर्स हु विश टू ऑब्टेन रीजनेबल प्राइसेस फॉर देयर आउटपुट, ये बेचने जा रहे हैं, मार्केटिंग है भाई, तो इनको आउटपुट के लिए दे नीड, द मेंबर्स आर दोज प्रोड्यूसर्स हु वांट टू सेल देयर आउटपुट टू द मार्केट। Here the members are farmers who wish to jointly take up farming activities. Why? Because in India we face this problem of fragmentation of land. The land is divided between brothers and the family members or the cousins. So what people do is, when such small piece of land is there, what they do is they join hands with someone else and they take one particular piece of land, and all farmers come together. I have already given you example of Anand, Amul, and that's how things work in a farmers cooperative society. Credit cooperative society comprises of persons who seek financial help, जिनको पैसा उधार पे चाहिए, so on, और those who want to borrow money, lend money, जो देने वाले हैं वो credit cooperative society के लोग हैं। Housing cooperative society, these are the people who want accommodation at लोअर कॉस्ट, ताकि कॉस्ट्स जो हैं वो ज़्यादा ना हो। इसका मेजर रीज़न क्या होता है कि आपको जब इंस्टॉलमेंट्स पे चीज़ें मिल जाती हैं, सो यूजली इट कम्स आउट टू बी चीपर फॉर यू। वन, मैं एक बार थोड़ी सी कैश डाउन पेमेंट करती हूँ और बाकी क्या है, इंस्टॉलमेंट्स पे ले लिया। सो दिस इज व्हाट इज दी what we are talking about when we are talking about the members of a cooperative society. Next, profits कैसे डिस्ट्रीब्यूट होते हैं? कोऑपरेटिव सोसाइटी में लोग क्या करते हैं? अपनी कैपिटल पूल करते हैं। जब कैपिटल पूल करते हैं तो उनको क्या रिटर्न में मिलता है? डिविडेंड मिलता है, क्योंकि बहुत ज़्यादा एडवर्टाइजिंग पे पैसा नहीं खर्च हुआ होता, बहुत ज़्यादा फैंसी टाइप नहीं होती कोऑपरेटिव सोसाइटी, तो डिविडेंड जो आता है वो कंपैरेटिवली कम आता है, और ये लोग ज़्यादा प्रॉफिट मार्जिन भी नहीं रखते, दो डोंट कीप हाई प्रॉफिट मार्जिन। वाई? बिकॉज द इंटेंशन इज वेलफेयर ऑफ सोसाइटी। सो व्हाट हैपेंस इज, अगर कोई प्रॉफिट आता है तो वो डिविडेंड के तौर पे डिक्लेयर होता है, और वो बहुत कम होता है कंपैरेटिव। दैट्स व्हाई पीपल आर नॉट हैप्पी बीइंग मेंबर्स ऑफ अ कोऑपरेटिव सोसाइटी। सो प्रॉफिट डिस्ट्रीब्यूशन इफ एनी आर डिस्ट्रीब्यूटेड वन एज पर कैपिटल कॉन्ट्रीब्यूशन, यहाँ पर जितनी कैपिटल कॉन्ट्रीब्यूट की या परचेजेज मेड बाय द इंडिविजुअल, जितना उतना उसने गुड्स परचेज किए। ओके, प्रोड्यूसर में इफ एनी डिस्ट्रीब्यूटेड ऑन द बेसिस ऑफ द कॉन्ट्रीब्यूशन टू द टोटल पूल ऑफ गुड्स, कितने गुड्स पूल किए हैं, जितना पैसा लगाया है वो एक ही बात होगी। गुड्स यहाँ पर प्रोडक्शन करने के लिए कितना सम पैसा दिया, प्रोडक्शन करने के लिए, रॉ मटेरियल खरीदने के लिए, या टोटल गुड्स के लिए। इफ एनी प्रॉफिट्स इफ एनी डिस्ट्रीब्यूटेड ऑन द बेसिस ऑफ कॉन्ट्रीब्यूशन और टू पूल ऑफ आउटपुट, भाई आपने कितना सामान बेचा उस हिसाब से, आउटपुट के हिसाब से, तो आप कितना लगा रहे हैं और कितना बिक रहा है उसके हिसाब से डिविडेंड डिक्लेयर होगा ना। फिर फार्मर्स में और क्रेडिट कोऑपरेटिव सोसाइटी में और हाउसिंग में बेसिकली प्रॉफिट डिस्ट्रीब्यूशन नहीं होता, क्योंकि फार्मर्स का क्या होता है, वंस दे गेट द प्रोड्यूस, तो जब यील्ड हाई हो जाती है, प्रोडक्टिविटी हाई हो जाती है, तो ये उसी को ही अपना प्रॉफिट जनरेशन या अपनी रिटर्न्स या रिवॉर्ड्स मानते हैं। क्रेडिट कोऑपरेटिव सोसाइटी में अगर कोई प्रॉफिट आता है तो उसको वापस बिजनेस में कोऑपरेटिव सोसाइटी में डाल देते हैं, ताकि क्या हो सके, वो पैसा दोबारा से री इन्वेस्ट हो सके, आगे दिया जा सके, क्योंकि इंटरेस्ट ही आता है इसके ऊपर। एंड हाउसिंग कोऑपरेटिव सोसाइटी में पैसा तोड़ के आता है, इंस्टॉलमेंट्स में आता है, इकट्ठा नहीं आता, तो प्रॉफिट्स के चांसेस कम होते हैं। और अगर ऐसा भी होता है तो व्हाट दे डू इज दे बाय द पीस ऑफ लैंड आगे कंस्ट्रक्शन के लिए या उसको एक्सपैंड करने के लिए। तो यूजुअली प्रॉफिट वाला सिनेरियो इन तीनों जगहों पर नहीं होता। ऑलराइट, next thing we talk about is exclusive feature. So now, what is exclusive feature? That is the extraordinary point in all types of cooperative society. So consumer cooperative society में extraordinary point क्या है? That they purchase goods in bulk from the wholesaler and sell goods to the members. ये इनका अलग अलग exclusive point है।
Similarly, what do the producers cooperative do? It supplies raw material, equipment and other inputs to members. सब चीज़ें मेंबर्स को मुहैया कराते हैं एंड ऑल्सो बाय आउटपुट फॉर सेल, कुछ चीज़ें सेल करने के आउटपुट भी चीज़ें खरीदते हैं उस तरह से. Now, marketing का क्या है? It pools the output of individual members and performs marketing functions like warehousing, transportation, पैकेजिंग. एक्चुअली मार्केटिंग पॉसिबल तभी होती है जब क्या हो रहा है कि जब हमारे गुड्स जो हैं उनको हम पैक कर रहे हैं, उनको हम वेयर हाउस पे लेकर जा रहे हैं, स्टोरेज कर रहे हैं और सही टाइम पे उनको मार्केट में निकाल रहे हैं. सो ये किसका काम है? मार्केटिंग कोऑपरेटिव सोसाइटी का. फार्मर्स कोऑपरेटिव सोसाइटी का काम क्या है? दे हेल्प टू इम्प्रूव yield, returns and solve problems of fragmented land. I've told you from the very beginning, land fragmentation as well as problem India में क्या है कि we are an agrarian economy but our land is fragmented in so many places that yield doesn't come out to the right kind of quantity. yield ज़्यादा होगी तभी तो हमारे profit ज़्यादा होंगे, तो returns ज़्यादा होंगे. उसके लिए this is what the exclusive feature is. And housing में these societies construct flats, provide plots and paying in installments. हाँ, मैं help करते हैं अपने members को, not consumers, अपने members को to pay in installments. Now here are some local as well as international example of different types of cooperative society. We have super bazaar, we have industrial service cooperatives. यहाँ पर मार्केटिंग के अंदर नेशनल एग्रीकल्चर कोऑपरेटिव मार्केटिंग फेडरेशन, आई थिंक आपने NACMF, ठीक है, तो इसका नाम सुना होगा. देन क्रेडिट एग्रीकोल, दिस इज फ्रॉम फ्रांस, देन इन फ्रांस रादर. देन अर्बन कोऑपरेटिव बैंक, सारे के सारे उसके अंडर आते हैं. एंड ब्रॉडलीफ होम्स, ये हाउसिंग कोऑपरेटिव सोसाइटी में आती है. तो देयर आर मेनी टाइप्स ऑफ कोऑपरेटिव सोसाइटी. एक क्विक कड़क रिकैप. कंज्यूमर कोऑपरेटिव किसके लिए है? कंज्यूमर्स के लिए. प्रोड्यूसर्स कोऑपरेटिव स्मॉल प्रोड्यूसर्स के लिए है, ताकि वो किसको बीट कर सकें? बड़े बड़े कैपिटलिस्ट को. मार्केटिंग कोऑपरेटिव किसके लिए है? उन प्रोड्यूसर्स के लिए जो गुड्स को प्रोडक्ट सेल करना चाहते हैं, आउटपुट फॉर सेल. नेक्स्ट टाइप ऑफ कोऑपरेटिव सोसाइटी फार्मर कोऑपरेटिव सोसाइटी किसके लिए? फार्मर्स के लिए. और ट्रेड कोऑपरेटिव सोसाइटी किसके लिए? उन मेंबर्स के लिए. पीपल 10 मेंबर्स कम टुगेदर एंड दे गिव ईजी लोन्स टू पीपल एट लेसर रेट ऑफ इंटरेस्ट एंड दे वांट टू एलिमिनेट दी प्राइवेट मनी lender. और हाउसिंग कोऑपरेटिव सोसाइटी किसके लिए? 10 people come together, pool their resources, buy a piece of land, construct a house, build a house, give it to their members in installments so that those who cannot afford can get the houses. So this is what the different types of societies talk about. Rest you can just see this table and understand. So for right now we are over with cooperative society. Next topic is joint stock company, which will get in the next video. Bye bye, take care and have a good time.